हेलो एंड वेलकम। दिस इज अपूर्व दिस साइड। एंड टुडे हम लोग जो है ये पार्ट लेंगे कि टैली का जो स्टैंडर्ड एपीआई है, ये जो है टैली का जो स्टैंडर्ड एपीआई, दिस आर द डिटेल्स। तो ये बेस्ड ऑन दिस, हाउ डज द स्टैंडर्ड टैली एपीआई वर्क, राइट? So Tally basically, as we understand, has got two standard ways by which Tally extracts the data. One is the XML, the ready reports, and second is the ODBC with some calculations. So what is the basic difference between those two is, see, ODBC is going to extract it through the schema and it extracts the snapshots. Well, XML में क्या होता है कि Tally has got reports made. So those reports are then extracted through XML. That is what in nutshell what XML and ODBC is. So ODBC is this thing. But ODBC में एक negative ये है कि वो below the second level of hierarchy it does not go. So for example, if I'm looking at within the ODBC, something like voucher, and I go down to all inventory entries and I want to go to batch allocation. So it will not pick up at batch allocation. So second level पे वो नहीं जाएगा, वो जो है एक certain level पे जो है ODBC जो है वो restrict हो जाता है. Then I next come down to XML, और XML में we will look at three different companies. तो आपको तीन चीजें जो हैं वो हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेंगी from this. One is a single company usage, right? SV from date, SV current company, and SV to date. So any person who's seeking to make a mobile app, any person who seeks to make a mobile app or is looking at integration with third party, then इसके लिए जो है वो this kind of a presentation is most useful. So in a single company, what happens is you have an SV from date and SV current company. So these three parameters are very, very important. So what you will get is on your Google Drive or during your in-person demo, you will get a large number of presentations, right? And उसमें से आपको जो है वो काफी सारी चीजें मिलेंगी. So now, for example, I pick up my say voucher register and I want to extract my voucher register. तो ये आप पूरा का पूरा envelope ले लें. And then for those of you who have a Tally Prime developer, then that's great. Those of you who don't, then you have to have a Tally Prime developer with you. So how to get a Tally Prime developer is just one second. Here we go. Oh, yeah. So go to Tally Prime developer, go down to tools, and then put local host this thing, and then you click this thing, this XML. This so this XML is a certain version. You have an envelope, a header. Within the header, you say export. So when so you can do three activities: export, import, or sync. When it is data, then it means a report. When it's a collection, ledger, and then function. So, but we primarily use data and ledger. And then this is the ID is the voucher register. And just simply copy and paste. And here are the static variables. So, इधर हम ऐसे करेंगे कि SV voucher type name would be purchase. XV export format is XML, right? And here I say TDL message, I give it, and I say go. Once I say go, then what happens is then Tally does an export here. So ये देखिए Tally ने क्या किया, ये export किया. This is the XML, this thing. If you give this output to any person who knows basic Python or this thing, he should be able to extract the data from your database. Now what I do is I go back here, right? And then I go down to my second portion, which is this thing is there. So this is how this thing is there. Now, one aspect which you need to see is how to handle the parameterized reports and how to handle the repeat variables. So repeat variables क्या हुए? Suppose you need to see profit and loss statements across periods and time. तो उसका भी कोड हम लोगों ने सपोज दिया हुआ है. तो सपोज ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का है. So I export this particular report and then I need to see profit and loss. So I do a repeat variables, a repeat set from date, from to date, from date to date, from date to date. I say control A, control C, right? And then I go here. And then I go down to Tally Prime Developer again. Yeah.
आई गो डाउन टू टूल्स, आई गो टू टैली कनेक्टर। तो ये क्या होगा, ये रिपीट करता रहेगा इसको, रिपीट दिस, रिपीट दिस, रिपीट दिस, रिपीट दिस। अब नाउ यू मस्ट बी आस्किंग हाउ टू गेट दिस लोकल दिस थिंग वर्किंग। सो व्हाट यू नीड टू डू फॉर दिस इज यू नीड टू गो डाउन टू हेल्प, you need to go down to settings, you need to go to connectivity, you need to say client server configuration and both. So if this is done, then the Tally will act as a web server. So basically we are telling you how the all the apps are working, जिससे कि आपको डेटा जो है बेसिकली दिखाई देता है, वो किस तरीके से आपका डेटा निकालते और इधर जो है आपको जो है उसमें से डेटा मिलता है। तो इसमें देखिए ये कंपनी नहीं मिली उसको, तो ये रहा सैंपल वन किया और मैंने गो किया। जब मैंने गो किया, जब इधर मैंने गो किया तो ये देखिए ये मेरा ओवर पीरियड्स एंड टाइम जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो है स्टेटमेंट अलोंग विद द रिपीट वेरिएबल्स आ गया। ठीक है ना। सो दिस इज द सेकेंड पोर्शन विच वी वांटेड टू डू इट। नाउ थर्ड इज द कॉन्सेप्ट विच इज ऑफ द पैरामीटराइज्ड रिपोर्ट्स विच इज द लेजर वाउचर्स एंड द स्टॉक आइटम वाउचर्स। तो ये जो है थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, if I go down to tally here, I go down to profit and loss statement, I go down to sales accounts, right? I go down to civil interior works, I go down to it here. तो ये देखिए, it is not, so sales account is not drilling down to voucher register. Voucher register is a separate report, but it is drilling down to ledger vouchers. और उसमें क्या है पैरामीटर, ये सिविल इंटीरियर वर्क। ये आपको समझ में आया। ये सेंसिटिव डेटा है, मतलब ये है, तो मतलब ये कि आपका जो सेल्स है वो इट इज नॉट दिस थिंग। अगेन आई एम गोइंग थ्रू दिस अगेन, आई गो डाउन टू सेल्स अकाउंट्स, आई गो डाउन सिविल इंटीरियर वर्क्स, आई गो डाउन हियर, दिस इज द लेजर वाउचर्स इज। और ये आपका एक पैरामीटर, सपोज आई हैव गॉट 1,000 सच सेल्स अकाउंट्स, तो आपको 1,000 बार आपको क्वेरी करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आपका जो जो सेल्स रजिस्टर है, माफ करिएगा, वो इधर से आता है। ये देखिए ये सेल्स रजिस्टर है विच इज एक्चुअली द वाउचर रजिस्टर विच इज द सेल्स वाउचर। बट ये जो है वाउचर लेजर वाला जो है वो सेपरेट है विच इज अ पैरामीटराइज रिपोर्ट। तो ये जो पैरामीटराइज रिपोर्ट्स है सर, इनको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे ये निकाल रखा है। और इधर आप वाउचर लेजर पे गए, ये गए, माफ करिएगा, ये वाली जो रिपोर्ट है, और इधर आपने ये एनवलप लिया। ठीक है ना, ये वाला किया, और इधर आपने स्पेसिफिकली उस लेजर का नाम लिया जिसके लिए आपको एक्सट्रैक्ट करना है। सो यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है दैट यू हैव टू रिपीटेडली हिट टैली टू गेट द आउटपुट डन। तो मैं इसमें से इधर आया और मैं इधर गया, मैंने इधर किया, मैंने ये कंट्रोल ए, मैंने बैक स्पेस किया, कंट्रोल वी किया, और इधर मैं आया और मैंने कहा ये लेजर वाउचर्स हेडर दिस, ये डिस्क्रिप्शन एक्सएमएल, और ये क्या किया, सिविल इंटीरियर वर्क ले लिया, ये ले लिया सिविल इंटीरियर वर्क। ठीक है ना। And then what I do is, and this is from which date to which date, explode flag yes, and I say go. तो जब मैंने गो किया तो मेरा पूरा लेजर वाउचर के डिटेल्स जो थे उस सिविल इंटीरियर वर्क्स के आगे। तो ये क्या है, सिविल इंटीरियर वर्क बिलोंग्स टू द सेल्स अकाउंट। ऐसे सपोज आई हैव गॉट 30 such sales accounts, then each time I'll have to go and get the data for the complete extraction। तो ये आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए व्हाट्स अ पैरामीटराइज्ड रिपोर्ट। वही चीज आप एक्सटेंड कर दो down to down to down to another down to another type of report which is अगर मैं इसमें से एक्सटेंड करूं कि इसका, अगर मैं इसका एक्सटेंड करता हूं कि अगर मैं इसका एक्सटेंड करता हूं, अरे एक्सटेंड द सेम लॉजिक हियर, अगर मैं इसमें एक्सटेंड करता हूं टू स्टॉक समरी, आप ये देखिए ये स्टॉक समरी में मैंने एक्सटेंड किया इसको, मैं एल्यूमिनियम डोर पे आया, मैंने एंटर किया, तो ये क्या आ गया मेरा स्टॉक आइटम वाउचर्स। दिस विल अगेन गो आइटम बाय आइटम, जिसमें कि आपको फुल टाइम का जो है आपको इनवर्ट वैल्यू और ग्रॉस शो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए वो यूज आता है। यू हैव टू गो आइटम बाय आइटम फॉर इट। तो अभी मैं इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो है वो मैं आपको धीमे धीमे बताना शुरू करूंगा कि कहाँ कहाँ पे। तो रिपीट वेरिएबल्स इज डन, लेजर वाउचर्स इन द स्टॉक आइटम वाउचर्स इज देयर।
तो लिमिटेशंस क्या है कि एक्सएमएल में कि फर्स्ट इट इज ओनली गोइंग टू बी फॉर अ सिंगल कंपनी, यू कैन नॉट एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल कंपनीज. सेकेंड इज दैट आपका व्हेन यू हैव पैरामीटराइज्ड रिपोर्ट्स यू हैव टू टेक मल्टीपल हिट्स. थर्ड इज इन टैली यू नीड टू गो फॉर अ टॉप डाउन अप्रोच. एप्स में आपको टॉप डाउन मतलब दिस थिंग्स, आप इस तरीके से आप ये देखिए टैली डज नॉट अलाउ यू टू गो फ्रॉम बॉटम अप. सो यू गो फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, you go down to sales accounts, you go this, you go down this. It does not go bottom up, right? Then when you are extracting the data for daybook over large data, तो डेबुक ओवर लार्ज डेटा के लिए करना क्या होगा, आपको टूल्स पे जाना पड़ेगा, टैली कनेक्टर. यू कैन, आई शो यू हाउ टू एक्सट्रैक्ट द डेबुक डेटा. तो सपोज आपने इसको ऐसे किया, माफ करिएगा, ये बैक स्पेस किया, मैं इधर आया और मैंने डेबुक का अगर मेरे को डेटा निकालना है, सो देन व्हाट आई डू इज आई टेक से बिल रिसीवेबल वाला उसमें, ठीक है ना. तो आपको इधर कलेक्शंस रिपोर्ट सबके इधर मिल जाएंगे, राइट. तो ये आपको, यू हैव टू इग्नोर दिस, यू हैव टू पिक अप दिस वन फॉर योर टेस्टिंग. सो यू पिक दिस अप, शिफ्ट, ये कंट्रोल सी, राइट, ये किया. एंड इफ आई पिक अप दिस एक्सपोर्ट एंड इफ आई पिक अप दिस टाइप इज डेटा एंड आई पिक अप डे बुक, राइट. तो ये जब मैं डे बुक को मैं एक्सपोर्ट करूंगा, सो एट टाइम्स दिस डे बुक कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम ओवर लार्ज डेटा. तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, डे बाय डे हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. ऑल्टरनेटिवली यू कैन मेक अ वाउचर कलेक्शन एंड देन डू द एक्सपोर्ट. तो इसका आपको वाउचर कलेक्शन का भी जो है आपको इसमें सैंपल मिल जाएगा कि वाउचर कलेक्शन जो है वो भी आप निकाल सकते हो. तो आप इधर से ये वाउचर एक्सट्रैक्ट वाली रिपोर्ट से जो है ये आप जो ये कर सकते हो कि आपने ये लिया, ये तो यू मेक अ वाउचर, राइट. ये से कंट्रोल ए एंड देन यू सी दिस and then you export. To export this collection sales voucher, and the sales voucher is defined as collection name is this, type is voucher, that means voucher, your fetching is this, you can do it as this. तो अगर आपको इसको भी extract करना, then you can go on a day by day basis. That means for each given date you extract the data from Tally, राइट. तो ये एक आपका सेकेंड ऑप्शन भी जो है वो हो सकता है. सो दैट इज द सेकेंड पोर्शन विच वी नीड टू कंसिडर. तो ये है. Then there can be heavy load on the system when you're extracting large data. High time for synchronization. Suppose आपने voucher को extract किया, you're extracting it on a day by day basis. So high time for synchronization होगा. So we need to crash it because आपने suppose 10 minutes का synchronization का time रखा. And what Tally will do is that Tally will start synchronization time from the time when. So Tally, what it will do is, if you do it day by day, then it will extract for first day, then second day, then third day, and keep on going. So this might take a lot of time, right? So that might be a problem in terms of time and in terms of the accuracy of synchronization. That might be a problem, right? तो एक ये भी जो है ये बॉटलनेक जो है वो आ सकता है आप लोगों को, ठीक है ना. तो ये जो है आप लोगों को ये आ जाती है. तो इसमें ये मैं करंट इसमें स्लाइड में कर लेता है. देन द ट्रायल बैलेंस इज नॉट फुल्ली एक्सट्रैक्टेड. अब ट्रायल बैलेंस का चक्कर क्या है, आपके पास यू विल ऑलवेज गेट एन एक्सेल शीट विच विल लिंक योर एक्सएमएल आउटपुट. तो वो मैं आपको दे दूंगा एंड यू हैव टू सिंपली गेट, आपका सर्वर पे होना चाहिए, यू हैव टू सिंपली क्लिक रिफ्रेश एंड योर एक्सेल हैज टू बी अबव एक्सेल 2018 एंड अबव. सो हियर यू सी ऑल द ग्रुप्स एंड द लेजर आर इन वन रो. इसे पता नहीं लग रहा कौन किसका बाप है. सेकेंड, बिलो द सेकेंड लेवल आपको कभी भी लेजर बैलेंसेस यू विल नेवर गेट. सो फॉर एग्जांपल, if I go down to balance sheet here, right, and if I go down to loans and liability here, and if I pick up RF Sony, so RF Sony, I will get it here. RF Sony, I will get it here. Right, Anu Sony, RF Sony, I will get it here. But I will not get something which is under secured launch first aid India में नहीं मिलेगा second level. तो ये एक आपको जो है ये समझना पड़ेगा, इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है. It's a top-down approach, slow speed of this thing, and this thing is there. Now what happens is, within your mobile apps, the difference in the approach comes is like this. Suppose I need to do collection. So I get my sundry data here. Your mobile app number will match the
सन्ड्री डेटर्स डेबिट बैलेंस। मतलब मेरा कैसे होगा, ये टॉप डाउन अप्रोच का ये लॉस है, तो आई पिक अप दिस, आई पिक अप करंट एसेट्स एंड देन आई पिक अप सन्ड्री डेटर्स, ये रहा, तो ये डेबिट बैलेंस ही दिखाएगा। बट व्हाट कैन हैपन इज दैट माय मोबाइल कैन हैव sundry credit balances also, right? Am I correct or not? You can also have sundry credit balances also, right? Example, if I'm looking at say something like this, और अगर मेरे को अगर receivable का अगर if I want to look, my receivable can also belong to sundry creditors. राइट, तो मेरा जो रिसीवेबल है इट कैन बिलोंग टू सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड आई वांट द कंप्लीट विजिबिलिटी टू द लेजर बैलेंस। तो ये जो ट्रायल बैलेंस का जो डिवीजन होता है दैट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम। सो फॉर एग्जांपल आई वांट द कंप्लीट विजिबिलिटी बाय द कंप्लीट ग्रुप बैलेंस, but my payable and receivable can also belong to sundry creditors. It's not necessarily my receivable will belong only to sundry debtors. तो वो एक प्रॉब्लम जो है वो आती है लोगों को। तो दैट इज वन बॉटलनेक विच वी हैव व्हेन यू हैव वेरियस मोबाइल एप्स वगैरह के थ्रू आप जब इसको करते हैं, राइट, टॉप डाउन अप्रोच में एक ये इशू आता है। ठीक है, अब जो क्या होता है कि एक टिपिकल प्रॉब्लम ये आती है जो कि टैली के बंदों को आती है कि फॉर एग्जांपल इफ आई लुक एट दिस सेल्स रजिस्टर रिपोर्ट, और मैं इधर आया अकाउंट बुक्स में आया और मैंने कहा सेल्स रजिस्टर रिपोर्ट पे आया, एंड व्हाट आई डू इज आई क्लिक हियर, वंस आई क्लिक ऑन दिस आई से शो प्रॉफिट। तो ये देखिए व्हाट इज हैपनिंग हियर इज इट इज शोइंग द प्रॉफिट बेस्ड ऑन द क्लोजिंग रेट विच इज ऑन द लास्ट डेट। तो अगर मैंने पूरे ईयर का लिया, so this closing rate would be for the entire year, which will not. So some people are happy with that number, but some people are not very happy with that number. Some people say, no, 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 we want the perpetual rate, जो कि पूरे साल का आया। So in order to handle that, वो भी हम आपको देंगे कि वो कैसे नंबर निकालना है टैली से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास तीन अप्रोचेस हैं। वन इज यू कैन एक्सट्रैक्ट द स्टॉक वाउचर डिटेल्स ऑन अ डे बाय डे बेसिस। मैं एक तो सारे आइटम्स का एक एक करके निकाल लो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अगर इसका लिया, राइट, मैं टूल पे गया, मैंने टैली कनेक्टर लिया, ये लिया। अब एक तो ये हुआ कि सारे आइटम्स का एक एक करके जो है आप निकालना शुरू कर दो। ये अभी एनवेलप पे नहीं आया है। सपोज मैं कोई दूसरा ले लेता हूँ स्टॉक आइटम वाउचर में, बैटरी ले लेता हूँ। तो आप एक करो, एक लूप लगाओ, and in that particular loop you extract all the data for all the items, stock voucher details, the entire history कि बॉस हर तिथि पे क्या क्या था, and based on that then you get the rate. The second way, which we'll be giving you by in terms of the TDL, is in order to get the perpetual profit is you extract it through the purchase register. और आप परचेज रजिस्टर में you pick the minimum date and the maximum date and then go in a loop. So this is the sample code for it, right? ये कंट्रोल ए, डिलीट, कंट्रोल बी, और फिर गो किया। तो ये देखिए परचेज में आपको हर तिथि पे एक दिन पे कौन कौन से परचेज हुए वो सारे के सारे आ गए। देन यू गो टू द सेकंड डेट, द थर्ड डेट एंड द फोर्थ डेट। द थर्ड ऑफ कोर्स इज दैट यू कैन पिक अप द स्टॉक समरी एंड देन पिक इट अप फॉर ईच डेट। आपको रिपीट वेरिएबल पे वो किया गया। So the problem here is with the JSON extract is that if I look at this from the current slide is, so the thing is that the limitations are, if I go back to here is that one, it's a single company, there are parameterized reports, multiple hits, I need perpetual gross, then it's a top-down approach. I might not get complete data by adopting one approach. I need to adopt multiple approaches. So I need to go bottom up. Then slow speed of extraction for daybook over large data, day by day extract, heavy load on the tally system, high time for synchronization, trial balance is not fully. I need the trial balance fully extracted. मतलब मुझे पूरा का पूरा चाहिए बैलेंस शीट जो है, मेरे को बाप बेटा ग्रुप सब एक साथ ही चाहिए। आई डोंट वांट टू गो कि भैया एक जगह ग्रुप्स है और एक जगह लेजर है ज्वाइन कर रहे हो फॉर पेएबल एंड रिसीवेबल। वो सब मेरे को नहीं चाहिए, इट इज टू कॉम्प्लेक्स।
राइट, ट्रायल बैलेंस एंड देन देयर इज टॉप डाउन अप्रोच। राइट, तो इसका जो है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि वी हैव एक्चुअली मेड अ जेसन एक्सट्रैक्ट फॉर अनलिमिटेड कंपनीज, वेरी फास्ट एक्सट्रैक्ट। राइट, इट्स गोइंग टू बी कंप्लीट एक्सट्रैक्ट, देन कंप्लीट ग्रुप एंड लेजर स्टॉक ग्रुप, वो मैं आपको दिखा दूंगा, एंड देन जेसन एपीआई फ्रेंडली एक्सट्रैक्ट एंड टैली कस्टमाइजेशंस कैन बी हैपन एंड इट विल ऑल हैपन एज अ सिंगल हिट, नॉट रिपीटेड हिट्स। अब जो वेरी फास्ट एक्सट्रैक्ट जो जेसन पे हमने कैसे किया, वी adopted समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट। हमने क्या किया, हमने वाउचर को स्टडी किया। राइट, तो हमने रॉ डेटा से निकाला। सो व्हाट वी डिड वाज दैट वी व्हाट आवर टीम हैज डन इज दैट हमने अलग अलग तोड़ दिया उसको, वी broke it so that the load is minimal. So say voucher ledger bill will be extracted separately, voucher inventory details will be extracted separately, voucher ledger will be extracted separately. And then basically by using joins, we can get all the data in one single flow in any tool like Power BI or something. तो आपको Power BI में मिल जाएगा, database में मिल जाएगा, all in a single table. Right. So basically at the end of this process, you can say once you put it into the database, then you can make a web app here. Right. And in that particular web app, ये आप जो है, ये आपका जो है इस तरीके से आपने, एंड यू कैन एंटर इट, सो यू कैन मेक योर ओन मोबाइल ऐप आल्सो, राइट, फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज फ्रॉम योर ओन सर्वर। ये पॉसिबल है, इट कैन बी डन वेरी वेरी फास्ट, हमारे पास पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। राइट, तो एक तो ये है, हाँ। और तीसरा क्या किया हम लोगों ने, JSON Tally customization added complete extract cursor and unlimited number of companies। अब एक आपको मैं पते की बात बता रहा हूं कि व्हेन इट कम्स डाउन टू द इंसर्शन ऑफ डेटा बैक इनटू टैली, अगर मैं इंसर्शन ऑफ डेटा बैक इनटू टैली की बात कर रहा हूं, तो उसमें से एक ये चीज जो है बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि इस सैंपल इंपोर्ट का कैसे चलेगा। से फॉर एग्जांपल, ये मेरा एक्सेल की इंपोर्ट फाइल है। राइट, तो इसमें हम लोग हमेशा रिमोट आईडी यूज करते हैं। This remote ID will uniquely identify with the system. So हम लोग what we do is we use Python. हम लोगों ने Python पे किया, we go row by row and then we use the XML for import. क्योंकि हमारा TDL से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, we did not have it, right? तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसको जुपिटर पे चलाऊंगा। राइट, ठीक है ना। तो वैसे एक तो वेब ऐप से आप जो है डेटा भी एंटर कर सकते हैं। तो मैंने मान लो कि एक डेटा एंट्री है, मैंने कहा लेजर, और मैंने कहा डेमो अंडरस्कोर 20/1/2025, और मेरा ये इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ना, और मैंने सबमिट किया। तो जैसे ही मैंने सबमिट किया वेब ऐप से, मेरा डेटा जो है टैली के अंदर चला जाएगा। तो ये लेजर जो है, मैंने शिफ्ट टैप किया, मैंने कहा डेमो अंडरस्कोर 21, तो ये टैली के अंदर चला गया। दैट इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि वो एक्सएमएल के थ्रू हम कहीं से भी एपीआई से डाल सकते हैं। सो वी वांटेड टू मेक समथिंग लाइक द अदर SaaS providers, but actually we did not get approval for ownership of the data by our partners, because that is requires a lot of security and investment. So we did not go for it. Otherwise, because we need to encrypt the data, and then we need to make sure that no one can extract it, no one has access to that data. That is, and that is very, very expensive. And plus, hosting the data itself is very expensive, right? So we did not go for it. So we are going for on-site only, right? तो ये है हमारा, ये है। अब इसमें क्या हुआ, मैं इधर वापस इस पे आ रहा था जुपिटर नोटबुक पे, एंड वंस आई गो डाउन टू द जुपिटर नोटबुक, मैंने न्यू किया और मैंने पाइथन को मैंने खोला। राइट, और मैंने से सैंपल ये स्क्रिप्ट ले ली, कंट्रोल C। तो जब मैंने ये सैंपल स्क्रिप्ट ले ली, और ये मैंने किया, तो ये मेरा वेरिएबल्स क्या, मैंने कर्नल लिस्ट स्टार्ट किया, क्लियर आउटपुट किया और रन किया। तो जब मैंने रन किया, अभी मैंने एक्सेल में कोई चेंज नहीं किया है, तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस रिमोट आईडी, इसमें कोई डुप्लीकेट्स नहीं जाएंगे। यू सी दिस, इट्स ऑल्टर्ड ओनली। बट देन व्हाट हैपेंस इज व्हेन आई ऐड अ न्यू वन,
का 1350 और मैंने कहा सेव। बोले कंट्रोल सी और रन किया, तो आपको एक वाउचर जो है वो क्रिएटेड मिलेगा उस दिन का। राइट, ये देखो एक वाउचर जो है क्रिएट, अगर मैं टैली में जाऊंगा तो वो वाउचर क्रिएटेड मिलेगा। ठीक है ना? सो विद दिस आई कम डाउन टू द एंड ऑफ माय शॉर्ट डेमो। फॉर अ फ्री डेमो प्लीज डू कॉन्टैक्ट अस टू दिस। Please do subscribe to our channel, which is at MN Data Solutions 2042, क्योंकि सब लोग इसी पे ही कर रहे हैं। ठीक है ना? एंड स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल हु वांट टू टैली एपीआई इंटीग्रेशन, आप इसमें से लेकर के ये प्लेलिस्ट पे ले लें, और प्लेलिस्ट पे लेकर के आप जो है इसको, ये टैली एपीआई इंटीग्रेशन ये वाली प्लेलिस्ट पक्का सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय।